जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फिजिक्स के MCQ करेंगे क्लास 12th के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैप्टर का नाम है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो फर्स्ट है, मेटल सरफेस इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स व्हेन हिट बाय ग्रीन लाइट बट नॉट व्हेन हिट बाय येलो लाइट। द इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड व्हेन द सरफेस हिट बाय तो ब्लू लाइट। इधर हिंदी मीडियम में है। एक धातु की सतह को जब हरे प्रकाश से आघात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, किंतु पीले प्रकाश से आघात करने पर नहीं। इसके द्वारा आघात करने पर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। In a photoelectric experiment, both the intensity and frequency of incident light are doubled than the saturation photoelectric current. तो इसका आंसर होगा is doubled. Light of wavelength falls on a metal having work function in as gamma of photoelectric effect will take place. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। The electromagnetic theory of light failed to explain photoelectric effect. When the photon of energy have fall on a photosensitive metallic surface over function as V0, electrons are emitted from the surface. The most energetic electron coming out of surface having kinetic energy equals to Hv minus Hv0. Photoelectric emission occurs only when the incident light has more than a certain minimum. तो आंसर नंबर डी, frequency. The photoelectric threshold wavelength for silver is the energy of the electron ejected from the surface of silver by a incident wavelength. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। The work function for ALK and PT is 4.8 elevation 2.3 electron and 5.65 elevation respectively. Their respective threshold frequency would low. Option number A. The figure shows stopping potential V0 and frequency V for two different metallic surface A and B. The work function of A has compound to that B is less. Which of following statement about photon is incorrect? Photon eject no pressure. The rest mass of photon is 0. The blue lamp mainly emits lights of wavelength 4500 angstrom. The lamp is rated at 150 watt and 8% of the energy is emitted as visible light. The number of photon emitted by the lamp per second is option number A 3.3 into 10 to the power 19. Wave theory cannot explain the phenomena of Compton effect. Which of following is correct? D and A. फिर the wavelength of matter wave is independent of charge. फिर which phenomena base support the theory that matters have a wave nature. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन. विच ऑफ दीज पार्टिकल्स हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी हैज द लार्जेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ. ऑप्शन नंबर ए. If alpha particle, photon and electron move with the same momentum then their respective de Broglie wavelength. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. When the velocity of an electron increase its de Broglie wavelength. ऑप्शन नंबर ए, increase. The de Broglie wavelength of an electron accelerated through the potential V is volts. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. The maximum frequency and minimum wavelength of X-ray produced by 300 Kelvin electrons respectively is. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. तो ये हो गए 20 क्वेश्चन पूरे ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर. और अगर आपके इनके आंसर आपको सही से नहीं दिख पाते तो ये लो, इसके आंसर की भी मैं आपको दिखा देता हूँ. आप इनमें से देख लेना
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।